So tasty. So namaste, good morning everyone. Welcome to my forest rustic flavor. I am right now deep in the forest. Today is Sunday, so I'll be cooking vegetable yam curry today with Axone. And let me show you my kitchen. This will be my forest kitchen. I've designed this way, so can't wait to share to you all guys. So let's get started. यम है इसको बिना मसाला से, and this is a fermented bamboo shoot. इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग. दोनों मिला के सिंपल फूड आज पकाने वाला है. और दूसरा तरफ ये चालू है पॉट फायर में. इसको मैं मेरे याम को गर्म पानी में पहले डाल देता है. चलो, let it boil for some time and the second process will start after this. हम पहले हल्दी थोड़ा सा दे रहा है. रुके, मेरा ऑनियन हो, चिली हो, गार्लिक, जिंजर एलबिट, इसको मैं डाल दिया. चलो डाल दिया. The fermented bamboo shoot. हाथ नहीं कर लेते. I think that's okay. So फाइनल टेस्ट के लिए ये डाल रहा है मैंने, और थोड़ा हल्का से स्टिर करके याम को थोड़ा से हल्का से स्मैश करके तब मेरे याम करी रेडी हो जाएगा. थोड़ा सा सॉल्ट टू टेस्ट, नमक थोड़ा डाल देता है. नमक डाला नहीं अभी तक. Finally, my yam curry with fermented bamboo shoot and Axone is going to be ready. You can see it's cooked. तो इसको थोड़ा हल्का से घुमाता है ताकि पेस्ट थोड़ा से हल्का से पेस्ट्री बन जाएगा. इसको घुमाते हैं. अभी तो 5 मिनट में हो जाएगा. उसको बाद में साथ में खा लेता है दोस्तों. लीफ थोड़ा से कड़क हो गया. ओवर कुक करने से पसंद नहीं मेरे को, इसलिए मैं अभी हल्का से अभी ये लीफ डाल दे, रेडी हो जाएगा खाने. चलो दोस्तों, बहुत साल के बाद मैं मेरे गिटार पकड़ रहा है. For many years, so I'm just playing for myself. I'm totally out of the track. 35 years I have quit playing. My curry, the yam curry with fermented bamboo shoot, Axone, and the wild leaf is also cooked. So let me serve it. Serve it here. There the color is so tasty. This is all for today. It was yummy. The yam curry with fermented bamboo shoot was totally a blend of rustic flavor of the forest. And thank you so much for watching. Thank you everyone. Stay tuned. Please
Don't forget to subscribe. Please comment, please share, and yes, subscribe now at Lum Lum Travelers. So thank you guys. God bless you. See you next. And stay tuned. Till then, bye bye. God bless everyone. Thank you so much for watching. Thank you.